Assalamu alaikum, dear students. Today class 7th, subject science. Date है 24 अप्रैल 2021. आज का जो हमारा टॉपिक है सिलिक में ही है. ये है फ्रॉम कोकून टू सिलिक. फ्रॉम कोकून टू सिलिक. अब जब हमने वो ऑलरेडी ही देख लिया कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं, यानी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें है मेल और फीमेल. वीडियो ऑन करे ना वही इसको ना बिकॉज़ ऑन मेल और फीमेल हैं, और उसके बाद हैं एडल्ट सिलिक मॉथ, और उसके बाद लार्वा आ जाता है, और उसके बाद कोकून आता है. मगर हम इसके रेयरिंग के बारे में जान लेंगे. फॉर ऑब्टेनिंग सिलिक मॉथ्स आर रेयर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिलिक थ्रेड. यानी हम पहले सिलिक हासिल करने के लिए पहले हम मॉथ को लेते हैं और उसके बाद उसको पालते हैं, उसको मलबरी के पत्ते खिलाते हैं, और उसके बाद वो बड़ा हो जाता है. वो बहुत ज्यादा मलबरी 25 से 30 दिनों में खाता है. अब हम लिखें यहां रियरिंग ऑफ सिलिक मॉथ या सिलिक वर्म. सिलिक वर्म्स. Rearing of silk worms. A female silk moth lay hundreds of eggs at a time. How many? Hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of clothes. Strips of clothes पे रखा जाता है ये. यानी एक फीमेल देती है hundreds of eggs. इनको हम स्टोर करते हैं स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ या स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, या स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ पे या स्ट्रिप्स ऑफ पेपर पे. द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड सोल्ड टू द सिलिक वर्म फार्मर्स. जिनको बेचा जाता है सिलिक वर्म फार्मर्स, ये इनको दिया जाता है. यानी इन स्ट्रिप्स को फिर बेचा जाता है सिलिक वर्म फार्मर्स को. द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर suitable condition of temperature and humidity. The eggs are warmed to a suitable temperature for larva. यानी ताकि हमें लार्वा मिले, इनको अच्छा टेम्परेचर, suitable टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि हमें लार्वा हासिल हो, यानी ये बच्चा दे. टू हैच फ्रॉम एग्स. दिस इज done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. The larva called caterpillars. यानी इन लार्वा को क्या बोलते हैं? Caterpillars. See it. यानी कब? जब मलबरी अपने लीव्स देना शुरू होते हैं, जब ये नया क्रॉप देना शुरू हो जाते हैं, उसी वक्त में इनको ये दिया जाता है और इनको इस हाइजीनिक टेम्परेचर में रखा जाता है, हाइजीनिक कंडीशन में टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि लार्वा बने, उनको फूड यानी वहां पर अवेलेबल हो, ताकि मलबरी के उन पत्ते उनको अवेलेबल हो. इसी वजह से इस यानी मौसम का इंतजार किया जाता है. और सिलिक वर्म ईट डे और नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मस इन साइज. ये बड़े हो जाते हैं साइज में, ये दिन रात इन मलबरी ट्रीज के पत्तों को खाते हैं और इस तरीके से ये साइज में बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये तेजी से खाते हैं और तेजी से बड़े भी हो जाते हैं. The larvae are kept in clean bamboo trays
along with the freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to tiny chamber of bamboo in the tray to sip in cocoon. اب یہ 25 یا 30 دن کے بعد پتے کھانا بند کرتے ہیں اور یہ کوکون بنانا شروع کر دیتے ہیں. Small racks of twins may be provided in the tray to which cocoons get attached. اب یہاں پر تھوڑی تھوڑی سی شاخیں رکھی جاتی ہیں، ٹہنیاں رکھی جاتی ہیں تاکہ ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائے. The caterpillars or silkworm sip in the cocoon inside which develops the silk mouth. یعنی اس کے اندر میں وہ رہتا ہے، وہ کیڑا اس کے اندر میں رہتا ہے. باہر سے وہ اپنے ارد گرد وہ ایک کوکون سا بناتے ہیں، ایک کوکون بناتے ہیں ارد گرد اپنے، یعنی سپن کرتے ہیں یہ کوکون. تو یہ کوکون جب سپن کیا جاتا ہے اور جو لاروا ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے، باہر سے کوکون بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے جب یہ کوکون بن جاتا ہے اس کے بعد a pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. The cocoons are kept under the sun or boil or exposed to steam. The silk fiber separates out. The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling. اس کو بولتے ہیں ریلنگ. جو ہم اس میں سے تھریڈ نکالتے ہیں پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. ریلنگ دا سلک، ریلنگ دا سلک، جو ہم اس کو تھریڈ نکالتے ہیں اسی کو. Reeling is done in special machine which unwind the threads of fiber of silk from the cocoon. Silk fiber are then spun into silk threads. یعنی اب یہ کوکون جو ہیں ان کو ہم تھریڈس میں بناتے ہیں، تھریڈس میں بکھیرتے ہیں، تھریڈس میں ان کو یعنی چینج کیا جاتا ہے. which are woven into silk cloths by weavers. پھر اس کو ویورز سلک کلاتھس میں یعنی تبدیل کرتے ہیں یا وہ بنتے ہیں اس کو. یہ ہو گیا یعنی فرام کوکون ٹو سلک، یعنی کوکون سے سلک تک کیسے بن جاتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ سلک ہمیں کیسے مہیا ہو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، آگے انشاءاللہ اور باقی وسلام.